ऐसे में भी बाद में आने वाला जो वर्ब है दैट मस्ट बी अगेन इन द जीरन फॉर्म. सो लुक एट द एग्जांपल ऑफ दोज नाउन preposition combination जिनके बाद आने वाला वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन द जीरन फॉर्म. सो दिस इंक्लूड चॉइस ऑफ, excuse for, intention of, method for, possibility of, reason for, method of. So in noun preposition combinations के बाद आने वाला verb भी gerund form में ही होगा. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. George has no excuse for dropping out of school. For dropping out of school. So again, this is a word, it's a noun preposition combination again followed by gerund verb form. There is a possibility of acquiring this property at a good price. So possibility of is followed by a gerund verb form. There is no reason for leaving this early. So this is a noun preposition combination followed by a gerund form of verb. Connie has developed a method for evaluating this problem. So method for is a noun preposition combination. By now आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी preposition आ गया है उसके बाद फ़ौरन आने वाला जो verb है that will be in the verb in the gerund form. नाउ सो फार हमने स्टडी किया कि आपके पास अगर वर्ब preposition हो, नाउन preposition हो या adjective preposition हो. सो व्हाट अबाउट इफ एनी टाइम यू हैव only preposition which is followed directly by a verb, then verb will again will always be in the gerund form. For example, after leaving the party, this after is again we know by now is a preposition. So after leaving the party, Ali drove home. So the verb right after preposition the verb is in the gerund form. He should have stayed in New York instead of moving to Maine. So this of is again preposition followed by a verb in the gerund form. Now we spoke about those verb, adjective and noun with prepositions or preposition alone. अब हम स्टडी करेंगे उन लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स को which are always followed by infinitive form of verb and again never by the gerund form. So यहाँ पे इसको हाईलाइट करने का मकसद ये कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इन एडजेक्टिव्स के बाद आने वाला जो वर्ब होगा दैट विल ऑलवेज बी इन्फिनेटिव और आपने उसको जीरन नहीं मेंशन करना. तो अगेन पॉज योर वीडियो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स. अब हम पहले इन एडजेक्टिव्स को स्टडी करते हैं. द लिस्ट इंक्लूड्स एंशियस, boring, dangerous, hard, eager, easy, good, strange.